Hey, thank you, couple. Am I audible properly? I hope I'm audible properly. So let's wait for people to join in. More people will join in, and then we'll accordingly start off this session. I hope I'll get to know यहाँ पे where how people are joining in, number of people joining in. Okay. Couple, if you can hear me, do you know where I can see if people have joined in? How do I find out? Is it in the top corner or something? Top left corner. Your mic is mute, I guess. Yeah. Hey, hi. Yes, yes. Yeah. Okay. Hi, good evening, everyone. This is Kapil from Primes and Zooms. Thank you for joining our live session. Today we have with us Dikhit Das, who's the Nikon Technical Officer. He's going to be talking about Nikon Z6, Z7, and the new Nikon Z50. Hey, Dikhit, over to you. Hey, thank you, Kapil. Thank you so much. And I'm looking forward to this session. Thanks to Primes and Zoom for organizing this session. And hopefully it will be very interactive. People will join in and will be enjoying this session as well, right? Yep. We have a couple of people joined with us already. So I think you can. So I'll just see. Just give me 1 minute. Sure. Okay. Right. Over to you. Okay. Thank you, everyone. I hope everybody can see me clearly. It's really nice to be conducting this workshop online in Pune. So today आज हम बात करेंगे हमारे Nikon mirrorless cameras के बारे में. And before that, I'll just tell you my name is Dikhit Das again. I've already had an introduction. My name is Dikhit Das. I am working as a technical officer in Nikon India, Gurgaon. I'm working there and I was doing online workshops for a couple of months now. Lockdown के बाद जितने भी हमारे workshops हो रहे हैं, so we've been doing it online only. So now, what we will be doing in this session is, or what we are looking for, what I am looking forward to in this session is, अगर आप लोग Nikon mirrorless cameras के बारे में जानना चाहते हो, and if you want to come up, if you have any issues regarding, or if you want to know something about the Nikon mirrorless cameras, then please feel free to ask me questions. I'll be more than happy to answer them. Right now, let's to start off. Everybody हम सब ने देखा there has been a transition in terms of the technology, how technology has मतलब कैसे transfer, मतलब what do you call it, not transfer, sorry, how is it the transmission जैसे हुआ है accordingly. So initially what we had was film cameras, right? So if we talk about late 1990s में, तो maximum people they were using film cameras, right? So film cameras के time पे क्या होता था? We had this problem कि उस टाइम पे कि हम फोटो तो ले लेते, but we had no issue, मतलब we never had an idea कि हमें फोटो कैसे खींचा है, क्या होता है, and accordingly 3-4 दिन के बाद हमें वो नेगेटिव डेवलप होके आते हैं, and then we see कि हमारे फोटोज कैसे आए. So that was time consuming and it was only one shot. The photographer didn't had a better option कि मैंने उसको अंडर एक्सपोज किया कि ओवर एक्सपोज किया. उसके बाद एक नया ट्रांजिशन आया which was the DSLR. DSLR में जब आ गया, DSLR में क्या हुआ, once we click an image, immediately मेरे को पता चल जाता है कि by hitting the playback button how my photo has come up. अगर मेरा फोटो ओवर एक्सपोज है, अगर मेरा फोटो अंडर एक्सपोज है, immediately I can shift it to my, immediately I can rectify it and take a new photo. Then DSLR चल रहा है, अभी भी maximum people are using DSLR, but now a new ecosystem of altogether developed. वो ecosystem हो गया हमारा mirrorless ecosystem. Every camera industry, every particular जो भी camera बनाते हैं, they have shifted to something called the mirrorless technology. Now we all know mirrorless technology. If you don't know, I'll just tell you one simple thing. What is mirrorless camera? Mirrorless camera में जो जैसे नाम से पता चलता है, जो DSLR में मिरर मैकेनिज्म होता है, जहाँ से
for example, if I am showing this camera, there is a Nikon Z60 mirrorless camera. अगर मैं इसको DSLR से अभी if you can just imagine, तो यहाँ से लाइट आता है, फिर यहाँ पे एक मिरर होता है, मिरर में पे हिट होके लाइट ऊपर एक पेंटाप्रिज्म पे जाता है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से वी सी द सब्जेक्ट एंड देन हम फोटो लेते हैं, राइट। मिररलेस में क्या हो गया है, नाउ वी डोंट हैव दिस होल मिरर मैकेनिज्म, तो हमारा कैमरा और ज्यादा कम्पैक्ट हो गया और ज्यादा छोटा हो गया, इट इज इजी टू कैरी फॉर अस। एंड जो हमारे मिररलेस सॉरी डीएसएलआर कैमरा में एवरी टाइम वी वर कैरिंग अ कैमरा इट वाज मच बल्कियर, वो पूरा सिचुएशन ही हट गया है। नाउ मिररलेस कैमरास आर मच कॉम्पैक्ट, मच इजी टू कैरी, and we can roam around with it pretty comfortably, right? So in terms of, अभी मैंने बोल दिया how the whole transition come in terms of Nikon, how Nikon ने अपने मिररलेस कैमरा पे what all technological design, what all changes किया है, because if you are a Nikon user, अगर आप लोग Nikon user हो तो आपको पता होगा कि since 1959 Nikon was using only one particular mount, which was the F mount. DSLR में तो they was using one particular mount called the F mount. When they decided कि नहीं, now even we will shift to the mirrorless technology, they came out with something called the Z mount or the Z mount, and that's how हमारे Nikon के जो mirrorless कैमरा थे उनके सारे नाम हो गए Nikon Z series cameras, right? Now the first thing that we have in मेरे हाथ में अभी है Nikon Z6 camera, right? If you can see, yeah, it's a Nikon Z6 camera with a 2470 f4 lens, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्नोलॉजी की मैं बता रहा था, जो डिजाइन करा हुआ है निकॉन इन टर्म्स ऑफ हमारे मिररलेस कैमरा में, द फर्स्ट पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज वेरी नोटिसेबल इज द कैमरा माउंट साइज। इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, ये जो हमारा माउंट साइज आपको दिख रहा है, दिस इज द बिगेस्ट कंपेयर टू एनी अदर इन द कैमरा इंडस्ट्री। नाउ हाउ बिग इट इज, ये है आपका 55 mm डायमीटर। इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, इट इज अ 55 mm डायमीटर। नाउ 55 mm diameter which I've mentioned right now कि ये सबसे बड़ा माउंट साइज है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली डू वी गेट, क्या बेनिफिट हमें मिलता है इफ आवर माउंट साइज इज बिग एनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी यहाँ पे माउंट साइज बड़ा होने के बाद हमारा जो सेंसर है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज होता है एज टू एज। सो व्हेनेवर लाइट इज कमिंग इन द कैमरा, हमारे सेंसर के पूरे एज टू एज पे जाता है, राइट। यू कैन सी द सेंसर राइट प्रॉपर्ली, I guess you can see it, right? तो एच टू एच पे हमारा लाइट पूरा पहुंचता है, हमारा लो लाइट परफॉर्मेंस इस वजह से कैमरा का बहुत सही हो गया। सिमिलरली जितना आपका माउंट साइज बड़ा होगा, सो व्हाट आर निकॉन इंजीनियर्स, दे हैव दिस पॉसिबिलिटी कि लेटर बिकॉज ऑफ द बिगर माउंट साइज जिसको हम जेड माउंट या जी माउंट बोलते हैं, उसके लिए इन फ्यूचर हमारे जो इंजीनियर्स है, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ऑलवेज बिल्ड अप सम फास्ट लेंस। फास्ट लेंस बोले तो जिस लेंस का हमारा एपर्चर वैल्यू ज्यादा खुलता है, तो जितना हमारा माउंट साइज की वजह से हमारे इंजीनियर्स को वो चांस मिल जाता है कि दे कैन कम अप विद बिगर एपर्चर वैल्यू वाले lenses. So this will always help us in the future कि अगर fast lens अगर हमारे पास है, then we can always come up with incredible images and videos whenever we're shooting with the Nikon Z6 or the Z7, right? Now we already have one fast lens that Nikon developed किया था recently, which is a Z mount lens, जो है हमारा 58 mm और उसका aperture value है आपका 0.95। इट्स कंप्लीट मैनुअल लेंस है वो Nikon 55, हम उसको नॉक्टर्नल लेंस या नॉक लेंस बोलते हैं। इट्स एन अमेजिंग लेंस, इट्स कंप्लीटली मैनुअल लेंस। सो इन फ्यूचर ऐसे और भी लेंसेस आते रहेंगे। Nikon will come up with amazing lenses which will in fact help you in getting incredible low light performances वाले images and videos, right? Now that was the first thing कि हमारा माउंट साइज बड़ा होने के वजह से हमारा सेंसर प्रॉपर्ली एक्सपोज होता है, लो लाइट परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होता है। इन फ्यूचर Nikon engineers can also come up with bigger fast lenses. The next technological change or the technological जो advancement डिजाइन करा हुआ है वो है the flange back focal distance. फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस क्या होता है, अगर ये मेरा सेंसर है, इस सेंसर से जहाँ पे मैं मेरे लेंस को माउंट करता हूँ, दिस इज द पॉइंट वेयर आई माउंट माय लेंस, राइट। सो इस लेंस को हम, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस, राइट। नाउ ये जो हमारे निकॉन मिररलेस कैमरास में हमारा जो फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस है, दैट इज
16 mm as again जैसे हमारा diameter is something which is the biggest in the industry, हमारा flange back focal distance is something which is smallest in the industry, right? So ये दो हमारे डिजाइन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन हमारे मिररलेस कैमरा में Z सीरीज मिररलेस कैमरास या Z सीरीज मिररलेस these are the two technological design that have been made to improve the performance of the camera in low light and also in terms of focusing. Now जब मैंने आपको बोल दिया कि मेरा हमारे कैमरा का फ्लैंज बैक फोकसिंग फ्लैंज बैक डिस्टेंस कम हो गया है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू गाइस आर अगर आप लोग DSLR से आपने शूट किया है, देन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब भी आप कैमरा हैंडल लेते हो या इफ यू आर शूटिंग समवन, you have to maintain a certain particular distance, जिसको हम बोलते हैं minimum focusing distance, right? That minimum focusing distance हमारे DSLR में क्या है, जो हम नॉर्मल DSLR में यूज करते हैं, that is around 2.5 से 3 फीट, 2.5 to 3 फीट का हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होता है. If we cross that limit, हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस नहीं होता, इनफैक्ट हमारा लेंस विल कीप हंटिंग टू गेट द सब्जेक्ट इन फोकस. नाउ सिंस जो मैंने बोला कि हमारा फ्लैंज डिस्टेंस कम है 16 mm, तो हमारा जो मिररलेस कैमरा का जो focusing distance हो गया, which is it is even less than 1 feet. I can go more close to the subject and I can come up with proper focus images and videos. So this is one benefit कि हमारा फ्लैंज डिस्टेंस कम हो गया. फ्लैंज डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारा जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस हो गया वो कम हो गया. So we can now go more close to the subject and come up with amazing images, sharp and detailed images, right? The next benefit is जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, what we have in with us is a 2470 f4 lens, right? 2470 f4 lens पे जब मैं 2470 f4 लेंस पे अगर मैं फोटो लेता हूँ, मेरे फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस की वजह से, प्रोवाइडेड एक प्रॉपर लाइटिंग सिचुएशन हो जहाँ पे मैं एक पोर्ट्रेट फोटो ले रहा हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड में जो ब्लर आता है, जो बोके आता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हमारे निकॉन की जो एफ माउंट 2470 लेंस 2.8 पे आता है. सो सिंस माय डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड, तो मेरा f4 पे मुझे ऑलमोस्ट f2.8 का मुझे depth of field मिलता है, right? If there is any questions, you can please ask me anytime. I'll be more than happy to answer them, right? Okay. Now moving on. So what we have, as I've already shown in हमारे Nikon mirrorless cameras पे, as of now we have 3 cameras. Number one is the Z6, then the Z7, and then we have something जो एकदम नया है, which is called the Nikon Z50. Nikon Z50 is a crop sensor camera. उसके बारे में मैं आपको कैमरा दिखाऊंगा. Now it is coming up with the vlogger kit. उस kit में you have all the accessories that is required for a person who is into vlogging or travel करते. So I'll tell you more about all that जब मैं आपको वो कैमरा दिखाऊंगा, right? Then what we have is okay. Just give me 1 minute. Then what we have is now supposedly अगर आप Nikon user हो and then you want to use अगर आप then you want to shift to mirrorless camera, suppose आप सोच रहे हो कि मैं Z6 लूँ या Z7 लूँ या Z50 लूँ, then you already have this question आपके दिमाग में, तो कि मेरे जो Nikon के पुराने lenses है, जो f mount वाले lenses है, क्या वो चलेंगे मेरे Nikon Z6 कैमरा पे या Z7 या Z50 पे? तो ऑफ कोर्स द गुड न्यूज़ इज हाँ वो चलेगा, बट द ओनली थिंग इज, और जितने भी निकॉन के मिररलेस एफ माउंट लेंसेस है वो सारे आपके पास आपके कैमरा पे चलेंगे. द ओनली कैच इज यू नीड अ FTZ कन्वर्टर, व्हिच इज एफ माउंट टू Z माउंट माउंट. अगर वो एफ माउंट टू Z F2Z माउंट अगर आप अडाप्टर आप लगा लेते हो, तो निकॉन के जितने भी 360 इमेजेस है, यू कैन ऑल यूज देम प्रॉपर्ली इन योर कैमरा. तो वो लेंसेज जैसे आपके DSLR में जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है, जिस तरीके से वो फोकसिंग करता है, सिमिलर वेज पे दे विल परफॉर्म इन योर Nikon in your mirrorless cameras, right? Okay. You know the difference between Z6 and Z7. Okay, thank you for the question, Chanel. Goera Garo Hills. Okay, Meghalaya. Okay, I'm from Assam, so it's pretty close by to my place. So, the main basic difference between there are actually 4 basic difference between the Z6 and the Z7, right? The first difference जो आपका है is the megapixel.
Z6 has a megapixel of 24.5 and Z7 has a megapixel of 45.7 megapixels. So अगर if you are more into advertisement shooting या आप ऐसे shoot करते हो जहाँ पे बड़े बड़े banners poster shooting के लिए अगर आप या even in fact fashion photography आप करते हो, then you can always go for something which is called the Nikon Z7, right? तो उसका megapixel ज़्यादा है और आप जितना megapixel ज़्यादा you will have more details in the images, more और sharpness आपका बढ़ जाएगा, ठीक है? Then the next आपका जो difference है, so I told you the first one is the megapixel, जो हमारा next जो हमारा difference है, which it is the FPS, मतलब एक सेकंड पे अगर मैं फोटो खींचता हूँ तो मेरा कैमरा कितना फोटोज लेगा. Z6 में आपका 12 FPS है और आपका Z7 पे it is 9 FPS. Now why the difference? It is because of the megapixel, जो कि हमारा मैंने पहले बताया Z7 पे हमारा megapixel थोड़ा ज्यादा है. So 1 second में it can buffer 9 images properly and give you a good output. Similarly, in the Z6 जो हमारा 24 point, this is the Z6 camera जो हमारा 24.5 megapixel है, इसको इस पे आपको 11 FPS मिलता है, ठीक है, सॉरी 12 FPS मिलता है अराउंड दैट. देन हमारा जो थर्ड हमारा जो डिफरेंस है, इट इज द ऑटो फोकस पॉइंट. नाउ व्हाट इज ऑटो फोकस पॉइंट? अगर आपने इनिशियली कभी DSLR यूज करा होगा, देन यू विल सी जब भी आप OVF से देखो, आपके व्यू फाइंडर से देखो, तो सेंटर में कुछ ऐसे बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स पे कुछ डॉट्स होते थे, तो दोस पर्टिकुलर डॉट्स आर कॉल्ड आपका फोकस पॉइंट. वहां पे आप सब्जेक्ट को कोई भी जो भी आपको फोटो ले रहे हो, अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट को उसी पॉइंट के अंदर फोकस कर दो एंड देन यू टेक अ फोटो. अभी Nikon Z6 और Z7 में दिस फोकस पॉइंट हैव इंक्रीज एंड स्प्रेड आउट ऑल टुवर्ड्स द सेंसर, मतलब पूरे सेंसर पे अभी हमारे Z6 और Z7 है, ठीक है, सॉरी हमारे पूरे सेंसर पे हमारा ऑटो फोकस पॉइंट स्प्रेड आउट है. देन जो मैं कह रहा था कि Nikon DSLR पे जब आप देखते हो सेंटर पे, तो हमारे मिररलेस कैमरास पे Z6 पे 270 ऑटो फोकस पॉइंट हो गया और Z7 पे 493 ऑटो फोकस पॉइंट हो गया. Yes, autofocus, this is one of the difference in terms of the autofocus point. Now, how autofocus points help you? जब भी लाइक मैं पहले मेंशन किया कि सेंटर में अगर आपके DSLR पे जब ऑटोफोकस पॉइंट होते हैं, जब भी आप फोटो लेते हो, व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपका सब्जेक्ट पूरा ऑफ द फ्रेम है एंड यू आर फॉलोइंग दैट रूल ऑफ थर्ड वाला कंपोजिशन रूल एंड देन यू वांट टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड मेंटेन दैट कंपोजिशन, तो आप क्या करते हो, पहले पूरा आप सब्जेक्ट को फोकस करते हो एंड देन यू रीकंपोज योर शॉट DSLR में and then you take the photo. In mirrorless camera, the best particular part is you don't actually have to. आपका subject जहाँ पर भी है, आप accordingly for every particular place there will be one focus point dedicated to the subject, और जो भी आपका जैसे भी आपने जिसको भी आपको focus करना है, you can easily nail it, right? Now we have one question. Z6, Z7 supports 2 memory cards. How is the battery backup compared to mirror camera? Okay. First of all, thank you for the question, Khalid Bhagwan. Bhagwan, हाँ ठीक है. Z6, Z7 supports only one memory card slot, which is the XQD card. Now, ये है हमारा Z6 का, यहाँ पे हमारा memory card रहता है, and this is the memory card, which is the XQD card, right? And to your next question, how is the battery backup compared to the mirror camera? Okay, Z6 and Z7 are mirrorless cameras only. The battery backup is pretty decent in terms of images. अगर मैं बोलूँ आपको one particular battery cycle पे you can shoot around 600 images. और अगर मैं videos के बारे में बात करता हूँ तो in one battery cycle अगर आप 4K वीडियो शूट करते हो then you 4K वीडियो at 30 FPS, जो इस फीचर पे है मैं बताऊँगा. I'm just answering a question. तो जो 4K वीडियो है 30 FPS पे अगर आप शूट करोगे, यू विल गेट अ मैक्सिमम ड्यूरेशन वन साइकिल पे आपको 30 to 35 मिनट्स का आपको फुटेज मिल जाएगा 4K पे, सॉरी 25 to 30 मिनट्स का आपको फुटेज मिलेगा. लेकिन अगर आप रेगुलर शूट करते हो, सो फॉर एग्जांपल रेगुलर फुल HD 24 FPS पे 30 FPS या जितने भी FPS पे शूट करते हो, देन यू विल गेट अ फुटेज ऑफ अराउंड 35 to 45 मिनट्स, राइट? डिड आई मिस एनी क्वेश्चन? Okay, so Chanel Guerra from Garo Hills. So I hope I've answered your question. There are 4 basic differences. One is the ISO,
then is the autofocus point, then we have the FPS, and then we have the megapixel. So these are the four basic differences between the Z6 and the Z7. In case if you are more into shooting videos, I would always say to go for the Nikon Z6. It is much lower in price as compared to Nikon Z6, Z7, but in terms of video performance, it is amazingly incredible, right? Now, okay, thank you so much. You're welcome, Khalid. Okay. Then, do you have any more questions? No, we don't have any more questions. I would, thank you for all the questions. Okay, which body is better for wildlife? Anil Thakre, thank you for the question. I would say the body which is better for wildlife in terms of wildlife photography, you can always go for both of them, both of the cameras, Z6 and Z7. But Z7 will give you better performance in terms of megapixel. Uska megapixel ज़्यादा, and whenever you're shooting wildlife, if a subject is at a distance, then you can always shoot. And if you want to crop the images, you can always crop it. And just since आपका megapixel ज़्यादा है, तो आप उस body उस photo को you can easily crop it and have to retain the details, right? Now, Anil Thakre ji, and to everybody who is interested in wildlife, I would like to show you one particular video which has been shot in Z7, and it has been shot by Shah Zhang. If you're a wildlife photographer, you know him. He's pretty famous. So he is Nikon's brand ambassador, and he has shoot one video, the hunt for the cheetah, which I'll just show you, and then you can have. Okay, just go ahead and play the video, and I will talk about it. Great. I hope Anil Thakre ji, you liked the video, and everyone who's been a part of this session so far. So that particular video was, it's an amazing, incredible video. If you're seeing it properly, the colors, the details, and the way he was tracking the cheetah, or uska jo focus bhi jo aisa wo track ho raha tha, it was pretty amazing, right? So to answer to your question, sir, Anil Thakre, like I said, Z7 is a better camera in terms of wildlife. One particular thing I've always, it will give you 9 FPS as compared to Nikon Z6, which gives you 11 FPS, 11 or 12 FPS. I'm confusing between. So I would always suggest you should go for the Nikon Z7 क्योंकि as एक तो आपने video देख लिया, उसका details and the sharpness and everything, also the auto focusing, tracking and everything. And this video has been shot in build. So 8-bit, 10-bit, and 12-bit, you can always change your video whatever way you want to shoot the video. You can always have but the use of the sensor or the details comes out incredible in the Z7 body, right? Yes. Okay. What is the range
lens range available for the Z mount. Okay, so with respect to the lens range, like I've already mentioned, अगर आप के Nikon user हो and you have been using Nikon lenses, for example, the F mount lenses, so we have around 360 F mount lenses. You can use all of them with the Nikon mirrorless cameras with the F to Z mount adapter. और जो हमारे that is one जो हमारे F mount lenses है 360 and lenses. And then if we have to tell you about हमारे जो निकॉन के जो मिररलेस कैमरा के एस लाइन लेंसेज है, तो वो जो लेंसेज है वो आपके पास वी हैव अराउंड, फर्स्ट मैंने आपको एक बता दिया, वी हैव दिस वाइड एपर्चर लेंस व्हिच इज वेरी रिसेंट नॉक्टर्नल लेंस 58 mm 0.95 उसका एपर्चर वैल्यू है. Then we have the kit lens which is 2470 f4 and we also have one 2470 with f2.8. Then we have 50 mm prime lens. Then we have 35 mm. We have 24 mm, 20 mm, 85 mm. So these are the lenses that you have in terms of mirrorless camera or the lens range for the Z mount. Right? Okay. And then calculate this which lens. Okay. With respect to the video, sir, if you're asking me which lenses he have used, I am not very sure about it. But one thing I'm pretty sure that he has used one 500 PF lens, which is available with the Nikon. It's the Nikon lens. So that is one I know, and rest I have no idea actually, to be very honest. But 500 PF lens he have used it because I've heard him saying that. Okay. So yeah, now let's talk about जैसे video देख लिया, we have seen the video performance of the video of the camera. No telephoto lenses as of now. Recently, we have come up with a new telephoto lens, which is 24 to 200 mm, 20 to 200 mm, which is here we have it now. It is very recent lens, so that is the one lens that we have in the Z mount. Right? Shefali Jain. Thanks. Okay. Then okay. Now since I was talking with the video जो मैंने देखा है, let's talk about the video features जो हमारे Nikon mirrorless cameras पे है, and it goes down with all the three of the cameras, Nikon Z6, Z7, and the Z50, right? Could you please share the high ISO images which shoot with Z6 and Z7? I'm so sorry, I don't have actually high ISO images with me. I just have certain two videos which I've shared. But later, if you can contact me on Facebook, I can of course give you and share the high ISO images which have been shot with Z6 and Z7. In fact, if you go to our Nikon Nikon Instagram account, you will see many images which has been shot with Z6. It's just you have to scroll a bit and find exactly which image you are basically looking for, what kind of image you're basically looking for, right? Okay, so sorry, just 1 minute, I just have a sip of water. So like I said, let's talk about our video features that we have in our mirrorless cameras. Z6, Z7 and Z50, yeah, Z6, Z7, Z50. It all shoots 8-bit internal video. ठीक है, और ये एक अगर if you want to shoot more than that in terms of Nikon Z6 and Z7, you can also shoot something called 10-bit, which is the Nikon N-Log, and one most amazing thing, which is the ProRes RAW. So if you want to shoot ProRes RAW, you have to use an external recorder, which is more or less like the Atmos Ninja V. You can use the Atmos Ninja V और वहाँ पे आप ProRes RAW, which is 12-bit आप video shoot कर सकते हो. Right? When you're using ProRes RAW, ProRes RAW is an amazing ProRes RAW का footage quality is pretty amazing. For example, अगर आपने 5 stop उसको overexpose भी कर दिया, 5 stop उसको underexpose भी कर दिया,
So you have enough details to bring back into the normal exposure. Color grading capacity जो है basically to all those cinematographers and filmmakers who work more on the color grading aspect of their video. So they always look for something which has more information. So ProRes RAW gives you much more information in terms of color grading and data editing. Come up with a specific tint to your video. So ProRes RAW always helps you, will give you enough opportunity to play around with that, right? So that is what I was talking about in terms of 8-bit, 12-bit, 12-bit that you can do recording the externally. So 10-bit and 12-bit, if you want to shoot, you have to use an external recorder, which is the Atmos Ninja V. 8-bit, पूरे तीनों cameras पे 8-bit चलता है. But the only thing is, if I talk about Nikon Z50 में you can't shoot with an Atmos Ninja. It is limited to only Nikon 8-bit, right? So, okay, now again, let's talk about the autofocusing system. वो latest जो है अभी latest, if you have already seen in the video, हमारे जो autofocusing system है, it is working pretty amazingly fine. So even if you're shooting wildlife, even if you're shooting a wedding or any particular music video, even the autofocusing is working out. It is at par with all the other competitors in the market, right? So now the improvement that has recently come in is the firmware update, जिसपे आपके eye detect और face detect और animal eye और subject tracking improved हो गया in the latest firmware update. So अगर आपके पास Z6 cameras है और आप if you have not updated your camera, please update your camera. You'll get all these features of the eye autofocus, subject tracking, and everything, right? Okay, I'm just checking. Okay. Then let's talk about, if you have any questions, please feel free to ask. I'll be more than happy to answer them. Then, okay, now since I was talking about the autofocus system, many cinematographers or photographers जो होते हैं, they don't prefer actually the autofocus system because उनको whenever they are shooting a movie and they are doing suppose वो shift focus करें, because if we consider focusing shift करना या focus करना is also a way of telling a story or to direct your audience कि आपको अभी इस subject से इस subject पे focus करना है when you shift the focus. So that also happens in a very, it has to happen in a very cinematic way, right? So initially क्या होता है जब ये auto focusing आ गया था, तो what happens whenever you're shifting from suppose मेरे से you're shifting to this particular subject, तो वो एक झटके पे होता था. तो वो जब मेरा cinematic way of shifting the focus and then pulling the audience to now look at this person, वो एकदम से चला जाता. So for उसको टैकल करने के लिए what Nikon did is हमारे Nikon mirrorless cameras पे we have this thing called autofocus speed and autofocus tracking sensitivity according to my need, according to my, if I'm a cinematographer, you're a cinematographer, you're a filmmaker, या कोई आप वेडिंग शूट करो, so whatever you're shooting, आपको जिस हिसाब से वो फोकस शिफ्ट होना है, सपोज इस सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट जिस ड्यूरेशन पे मतलब थोड़ा जल्दी या एकदम धीरे से, you can always play around with it in a auto focusing system. So what you can do is like जैसे मैंने पहले बताया, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार. If we have a Nikon mirrorless camera, all you need to go is to the custom shooting menu. वहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है which is the Z option, I don't think I see properly, let me hold it properly with इस ऑप्शन पे अगर आप जाओगे, then you see something called the autofocus speed and the autofocus tracking sensitivity, right? So when you tap that autofocus autofocus speed, you can always lower and lower your faster your focusing speed. So that way अगर आप कभी कुछ शूट कर रहे हो, then that means अगर आप कोई शूट कर रहे हो जिसपे आपको थोड़ा स्लो फोकस करना है सब्जेक्ट पे, you want to have that very cinematic focus shift वाला feel, और अगर आप gradually handle भी कर रहे हो and then you just want to shift the focus, so all you have to do is tap on the screen जिसपे आप फोकस करना चाहते हो, because it's a touch screen. उस सब्जेक्ट पे आप फोकस करो, टैप करोगे तो ग्रेजुअली वो फोकस उस सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? सो दीज आर, जैसे मैंने बताया, दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो निकॉन ने डिजाइन किया, सो दैट जो आपको मैनुअल फोकस में द वे यू प्ले अराउंड विद द फोकस, वो आप ऑटो फोकस में भी करो, एंड
come up with incredible results. All you have to do is tap with your finger, autofocus speed को ऊपर नीचे करो according to your need and then play around. सिमिलरली एक और सिचुएशन आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ मैं वेडिंग के बारे में बात करूँ तो वेडिंग में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे सामने से कोई अगर मेरा बंदा चला, सपोज आई एम द सब्जेक्ट, वहाँ पे कोई मेरे को शूट कर रहा है निकॉन मिररलेस कैमरा से, और कोई अगर सब्जेक्ट सामने से थोड़ा स्लोली चल रहा है तो मेरा ये जो ऑटो फोकस है वो अचानक से इस पे चला जाता है, इट लूजेस माय फोकस एंड गोज टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो इसको भी टैकल करने के लिए व्हाट वी हैव, जैसे ऑटो फोकस स्पीड मैंने आपको दिखाया था, similarly we have something called the autofocus tracking sensitivity. If you can see, this is the autofocus tracking sensitivity. So accordingly how much sensitive you want your camera to be, आप उसको अगर लो सेंसिटिव या हाई सेंसिटिविटी पे रखोगे तो दैट मींस यू कैन ऑलवेज अवॉइड दिस, ये जो फोकस शिफ्ट हो जाता है कोई अगर आपके सामने आ जाता है, यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट, राइट? देन okay, will there be, it's a question from Anil Thakre, will there be any difference in image quality due to lens in F mount and Z mount? So I think what you're trying to ask is अगर आप F mount lens आपके Z mount पे लगाते हो तो will there be any difference in the image quality? No sir, there won't be any difference in terms of image quality. जैसा आपका वो F mount lens works with the Nikon DSLR camera, similarly it will work with the mirrorless cameras. एक जो मैंने initially आपको एक point बताया था कि जब हम हमारा जो फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस है जिसके वजह से हम सब्जेक्ट के और पास जा सकते हैं, ऑफ कोर्स इन वाइल्ड लाइफ वी डोंट हैव टू गो टू क्लोज टू द सब्जेक्ट बिकॉज़ वी हैव लेंसेज, बट जनरली अगर आप एफ माउंट लेंस यूज करते हो यू वोंट गेट दैट फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस, वो जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है 1 फीट का आपको नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज यू विल बी यूजिंग द F2Z माउंट अडाप्टर। वो जब आप लगा लेते हो तो ये कैमरा का जो फ्लैंज बैक फोकल डिस्टेंस है it turns out to be similar to the mirrorless camera, sorry, the DSLR camera. तो उस वजह से आपको आपका वो फोकसिंग डिस्टेंस नहीं मिलेगा। बाकी in terms of image quality you'll have great results and similar results, in fact better results as compared to what DSLR would give you if you're using F mount lenses. All right, Anil Thakre ji? Great. Did I miss any more question? There is one more question. Okay, then okay. Why SB5000 flash on camera infrared do not work with Z7 and Z6? Okay, so we have one Sunil Kale. I actually have to check on this how SB5000 flashes on. Yeah, Kanga question. On do not work on Z7. I actually have to check on this. Once I check on this, I'll definitely let you know, Sunil Kaleji, why it happened. I will. What I'll do is at the end of the session, I will give you my Instagram link and my Facebook link. Then we can always work around. We can always talk and figure out what went wrong and where you have a problem. Diameter will not have an impact. No sir, the thing is, since आप F2Z mount को, it's continuing the same question where he was asking कि F mount और Z mount पे अगर आप Z mount lens पे अगर हम F mount lens लगा देते, diameter will not have an impact. No sir, the diameter will not have an impact because आपका जो mount होएगा वो F mount lens automatically बन जाएगा और आपका sensor accordingly will not have an impact. But I don't think the diameter will have any impact. It will work as smooth as it works with a normal DSLR. I'll just answer you in that way only. Okay, it won't have any impact, sir. So did I miss any more question? No. Okay. Now I have told you about Nikon Z6, Z7. उसके image video हमने दिखा रहे, थोड़े video features भी मैंने आपको बता दिया. I have told you about the autofocusing system, how you can play around with the autofocus speed अगर आपको manually autofocus करना है. Then we also have this animal eye detect and face detect, which agar aapko, if you're shooting something and you want to only use your touch screen, you can always tap on the faces of the people and then shoot them. There is one particular option also in Nikon mirrorless cameras कि अगर आप उसको touch करके भी you can always, only by tapping at the screen you can get the images taken right away.
फोकस हो जाएगा और आपका इमेजेस इमीडिएटली डन हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेम रेट्स. कितने फ्रेम रेट्स है और क्या क्या फ्रेम रेट्स के हिसाब से हमारे पास Nikon Z6, Z7 और Z50 में है. 4K you can shoot at 30 fps in the camera itself. Then if you want to shoot slow motion, you can shoot slow motion with and without audio at 12 fps. Without audio वाला जो feature है, it's an inbuilt आपको slow motion मिल जाता है. You can immediately see the footage and then you can shoot आपका जो slow motion है. कॉन्टिन्यूस अगर आप वीडियो पे स्लो मोशन शूट कर रहे हो तो यू कैन शूट टू अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 मिनट्स. उसके बाद को शूट नहीं होगा. 3 मिनट्स में यू हैव इनफ स्लो मोशन टू प्ले अराउंड विद. देन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे स्लो मोशन इनबिल्ट वाला नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू शूट इन 120 fps एट फुल एचडी, देन मैं 120 fps फुल एचडी विद ऑडियो शूट कर पाऊंगा. लेटर व्हेन आई एम एडिटिंग इट आई विल प्ले विद making the footage go fast or go slow accordingly, right? So these are the options that are available. You 4K 30p pe, then you have full HD at 120 fps, 100 fps, and 60 fps, 50, 24, 25, 24, 30, 25, and 24, right? So these are the fps available. I always suggest जब भी मेरा and if anybody asks me कि video shoot करने के लिए what is the maximum frame rate that I have to use, I always tell them तेरे कैमरा में जो भी maximum FPS है उस पे शूट कर. If you have 120, go shoot for that. So that is, and accordingly you also have to maintain your shutter speed जब आप वीडियो शूट कर रहे हो. अगर आपका 120 FPS है, you have to double your shutter speed, which is around 240. That is the relation between the shutter speed and FPS. You always have to keep your shutter speed double the FPS, right? So that was it. Now let me talk. If you have any questions regarding Nikon Z6, Z7 camera. How many people are there? Okay, so if you have any more questions regarding Z7, Z50, please feel free to ask, right? Then, with respect to, I will just go on to the Nikon Z50 camera, which we have. We don't have much time actually. So, जैसे मैंने बताया Z6, Z7 are full frame mirrorless cameras. Nikon के terminology में हम उसको बोलते हैं FX, right? FX body बोलते हैं. Then Nikon came up with something which is the Nikon Z50. Now I've shown you this is the Nikon Z6. It is very small, very easy to carry, very one hand operate में कर सकता हूँ. Now if this is the smallest camera, I'll show you the Nikon Z50, which is much more smaller camera. If you can show you this particular मेरे दो उंगली में, in fact I can carry this camera. That this small, right? So this particular body, Nikon Z50, it is a DX body. DX मतलब इसका एक sensor cropped है. It is that मैं आपको दिखा देता हूँ. So this is the sensor of the Nikon Z50. It's a crop sensor जिसको हम DX बोलते हैं या हम APS-C भी बोलते हैं. Nikon terminology में हम उसको DX बोलते हैं. It comes up with a very cute lens, which is the 16 to 50 mm DX lens. You can see it looks like almost a pancake lens. अगर आप देख रहे हो, it's very small, very easy to carry. और ये कैमरा इतना छोटा है. See, if I open this lens, ये maximum इतना खुलता है. This lens is 16 to 50. इसका लेंस है. Then why initially when Nikon came up with this lens, their main target was the vloggers. So vlogging अगर आपने अभी देखा है since the time of Corona, maximum time people what they are doing is वो घर बैठ के actually people who are very into and very hobbies and they are amateur but they want to grow more about it, know more about it. So जो भी वो घर बैठ के they are coming up with some, कोई food video कर रहा है, कोई they are doing some tips and some कोई yoga video कर रहा है. So they are all, this is all vlogging. एक time पे था जब लोग vlogging करते थे where people write and we have to read it. Now since the internet consumption जो हमारे पास है, we can like so many platforms where we can showcase जो भी हमने बताना है, जो भी हमने दिखाना है, whatever talents we have. So this vlogging thing came up. So this particular camera is to those particular people who actually have a DSLR or who are into phone photography, but they want to jump to the next level and understand the mirrorless technology, also take the benefit of great image quality and great video quality. तो ये particular camera
comes up with sort of with that उनके जो भी requirements हैं. Like I've already said, it's a small camera, it's a DX camera, but इसके जितने भी features है in terms of video, in terms of images, in terms of autofocusing system, सारे features यहाँ पे. In fact, it comes out with an external flash जो हमारे Nikon Z6, Z7 पे नहीं है. It comes with an internal inbuilt flash, ठीक है? So now let me tell you this particular the way this whole thing, it's a very low priced mirrorless camera. So if you want to have your hands on mirrorless cameras and you don't want to spend too much, and you can always look for this particular camera because it works absolutely similar to what our Nikon Z6 and Z7 camera does. Now ऐसा नहीं है कि ये खाली vlogging के लिए ही use करना है इसको, ऐसा कुछ नहीं. This camera has got around 12 FPS, so you can also use, supposedly if you want to shoot wildlife and you have some tele lenses of Nikon, then you can always go for this particular. You can always use the f2z mount adapter to get that lens. यहाँ पे उसको लगा के you can always come up with incredible footage. इसका megapixel है 20.9, autofocus points at 209 autofocus point, which is spread out ऊपर नीचे हर कहीं पे spread out. 90% of the frame is spread out होता है. Wherever आपका subject है, you can always nail the focus on them. You don't have to recompose. आपके focusing points spread out है, you can always nail your focus and shoot your subject with proper details. Then इसका जो in terms of video, जैसे मैंने बताया कि 4K शूट करता है, then at 30 FPS, then it अगर आप full HD शूट करोगे, similar to one Nikon Z6 and Z7, it will give you 4K का footage. अगर आप continuous one battery पे शूट करते हो, it will give you around 25 to 30 minutes का footage. अगर आप images खींचते हो, तो similarly it will give you around 600 around 600 images, because we personally, when we checked it, it came around between 582 or something. So at one particular one battery charge, एक बार पूरा full cycle battery charge पे. Then if you're shooting full HD video at 120 FPS, no matter what FPS you're using, अगर regular आप full HD video use shoot करो, you can come up with a footage of almost 35 to 40 minutes with one particular battery cycle, right? Now let me show you. Now we all know जब भी हम vlogging करते हैं, this camera comes out with a tilt down screen. See, जो हमारे बाकी mirrorless cameras में नहीं. So whenever ये tilt down screen आ जाता है, this basically my camera is in a selfie mode. I can see myself while I'm shooting, and मेरा जो भी operations होगा, I can always touch and do that in the screen. मेरा camera everything works display में, जो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे display पे, I'll have to just touch and do all that stuff यहाँ पे, ठीक है? What happens is when मैं इसको ऐसे नीचे लेके आता हूँ, यहाँ के जो मेरे buttons है, they stop working. Why stop working? They are the proper reason. जब भी आप कैमरा को ऐसा पकड़ते हो, you might mistakenly tap on certain menu button, जो वहाँ पे आपका वीडियो फिर या तो रुक जाएगा या फिर आपका वीडियो सॉरी मतलब डेल बी एस कुछ एक प्रॉब्लम आ जाएगा. तो उसके लिए ये आपको ये जब भी आप उसको नीचे करते हो, ये होल पैनल आपका टच स्क्रीन पे काम करता है. ये बटन्स आपके बंद हो जाते हैं एक्सेप्ट द शटर बटन एंड द रिकॉर्डिंग बटन, ठीक है? आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो. नाउ विद रिस्पेक्ट टू व्लॉगिंग, देयर आर वी नीड, अगर आप व्लॉगिंग करते हो एंड यू डोंट एक्चुअली हैव अ टीम, और सपोज आपने अभी कुछ वीडियो बना, आई एम जस्ट टॉकिंग, लेट्स जस्ट think in terms of vloggers right now. Supposedly you are a vlogger, you are basically used to shooting your videos in both in only mobile phones or something. Before going any further, I have one question which is by Khalid Bhagwan. Both are weather sealed. All of them are weather sealed in terms of body. Nikon Z6, Z7, Z50, all of them are bodies are weather sealed. They are made up with magnesium alloy body. It's pretty tough, and जैसे मैंने आपको दिखाया, it is completely weather sealed. It is similar to what Nikon Z6 and Z7 is with Nikon with the Z750, right? All of them are weather sealed. So that is it. Now coming back to Nikon Z50 vlogging, अगर if we just assume for a while कि अगर हम एक vlogger है और if I want to make a video of my own,
तो नॉर्मली ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो लोग फोन लेते, फोन के सामने आके देखिए ब्लॉगिंग एंड ट्रैवल अराउंड, और उनमें से कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं वहाँ पे थोड़ा ऑडियो का इशू आ जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रॉपर, अगर वो हेडफोन वाले वो स्पीकर से भी कहते हैं ऑडियो इज नॉट दैट पर्टिकुलरली नाइस, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। एंड इनफैक्ट इफ आर डूइंग सर्टेन लो लाइट पे अगर वो कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, देन इट डजंट कम अप that great in terms of performance, low light performance, right? So considering all that particular part, Nikon Z50, Nikon came up with a Nikon Z50 vloggers kit. Now, what we have in the vloggers kit is number one, we have this. As I was talking to you, talking with you with respect to sound. The first thing they came up with is the ceramic condenser mic, जो आप आपके निकॉन ब्लॉगर Z50 ब्लॉगर किट पे यूज कर सकते हो। नाउ like I was saying, supposedly even if you are shooting with your camera, आपने कैमरा लिया ब्लॉगर, आपके पास Z50 है, एंड देन इफ यू आर इन सम एनवायरनमेंट जहाँ पे थोड़ा बहुत एम्बियंस नॉइज बहुत ज्यादा है, सो व्हाट द कैमरा डज इज, कैमरा के अंदर जो माइक होता है, इट कैप्चर्स all the sound that is surrounding it. ठीक है, ये ambient noise पकड़ लेते हैं, so even if you are talking, so and it overlaps with certain some, suppose like गाड़ी का हॉर्न चला गया, and then it won't be easy for you later in the editing to pull up your voice और उसको नीचे करना, because एक ट्रैक में आता है और वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। एंड कैमरा what it does is ये पूरा ambient noise पकड़ लेता है, no matter whosoever is speaking it will capture। तो बस वही है कि the more the person is closer to it, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। उसको टैकल करने के लिए दे केम अप विद दिस पर्टिकुलर माइक। ये कैसे माउंट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। देन द नेक्स्ट थिंग इज द एपर्चर एलईडी लाइट। ठीक है, दिस इज द एपर्चर एलईडी लाइट। ये एमरॉन एपर्चर बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, उनका एक एलईडी लाइट है। इट इज एमरॉन एल एंड M9 लाइटिंग अप लाइट। सो आई विल शो यू। इससे आप ऑन करते हो तो आप अकॉर्डिंगली, इफ यू कैन सी माय फेस नाउ, माय, अगर मैं कैमरा सामने प्रॉपर्ली लिट अप, राइट, अगर अकॉर्डिंग टू माय क्रिएटिविटी या क्रिएटिवनेस आई कैन ऑलवेज प्लेस माय कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन अगर मुझे लग रहा है कि मेरा लाइट थोड़ा ज्यादा है, देन आई कैन ऑलवेज रिड्यूस इट, राइट। दैट पे वैसे बटन्स होते हैं यहाँ पे, इफ यू कैन सी, आई कैन ऑलवेज रिड्यूस द लाइट एंड इंक्रीज द लाइट, एक ऑन ऑफ बटन होता है, राइट। So these are the basic three buttons which you आप जिससे आप function करोगे, and this is where you charge your light, right? Now, as you can see, it is pretty amazing in terms of इतना छोटा सा LED, the amount of light it gives me. अगर ऐसे मैं normal scenario पे देखूँ, this is the light I have. If I put this up and I'm shooting some proper video where I'm talking about, yeah, कुछ vlogging कर रहा हूँ, then I can have always this camera, right? Now, this light, sorry. Now, as you can see in this particular light, there are 4 dots, right? These are magnetic connection point, contact point. This अगर आप उसको आराम से ऐसे निकाल सकते हो, and then these are the, यहाँ पे आपके LED lights है, which is around 9 lights, right? Sorry, अगर कुछ ज़्यादा पावर है, just want to show you, right? Now, why this thing? ये क्यों ये पैनल रिमूव करने के लिए हम क्यों किया हुआ है? So what comes is, अगर जैसे कि आपने देखा था कि ये लाइट मेरे मुंह पे पूरा व्हाइट लाइट था, राइट। नाउ इफ आई वांट अ वार्म टोन टू इट, फॉर एग्जांपल अ रेडिश टोन टू इट, और अ कूल टोन टू इट, फॉर एग्जांपल अ ब्लूइश टोन टू इट, और मुझे पूरा लाइट को डिफ्यूज करना है, देन एक इसके जो पाउच है, सॉरी दोनों पे पाउच होती है, इस पाउच पे यू गेट 2 कलर जेल्स एंड 1 डिफ्यूजर। सो ऑल यू हैव टू डू इज उनको यहाँ पे यू हैव टू उनको खोल के यहाँ पे आपको अटैच करना है, पुट दिस थिंग ऑन टॉप ऑफ इट, और फिर आपका लाइट अकॉर्डिंगली यू कैन व्हाटएवर लाइट यू वांट, इफ यू वांट अ कूल लाइट, इफ यू वांट अ वार्म लाइट, वो जेल्स लगा के आप कर सकते हो। देन ये सारा जो हो गया, अभी हम जो लास्ट पार्ट, एक 2 चीज और है। एक मैंने लाइट दिखा दिया आपको, फिर मैंने आपको माइक दिखा दिया। देन वी हैव समथिंग जैसे फॉर इफ यू आर ब्लॉगिंग एंड इफ यू वांट थिंग्स टू बी वेरी स्टेबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, वी हैव द गोरिल्ला पॉड। आई एम प्रीटी श्योर सबको पता होगा गोरिल्ला पॉड क्या है, व्हाई इट हेल्प्स इज लाइक इसके लेग्स जो है, आप इसको टर्न एंड ट्विस्ट करके वेरेवर यू वांट, विच पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर, सपोज कहीं ऊपर से लगाना है आपको कैमरा को या कहीं साइड से करना है, वेरेवर यू वांट टू माउंट इट, यू कैन अकॉर्डिंगली माउंट इट विद द हेल्प ऑफ दिस
legs, right? Then we have one more thing, which is the small dick. This whole thing is about a Nikon Z50 vlogger kit, and these are the accessories that comes around. This is the small dick. Small dick, basically this is the mount, जो base mount है हमारे Z50 के लिए, just to attach all of these accessories. This is what Small Dick is, a company which designs basically metal bodies, steel bodies just for the cameras. So for Nikon Z50, according to our need for the vlogger kit, they came up with this mount, right? Now a very amazing thing is here, वो है ये चीज. Normally जब भी हम tripod लगाते हैं, we are always looking for one particular coin, like a coin to type करना है. Now this particular thing, they have thought about this thing, वो यहाँ पे उन्हें attach कर, it's a very hard magnet पे ये attach हो जाता है. You're done with it, आप उसको आराम से फिर यहाँ पे लग दो, and sorry, अब उसको आराम से उसको यहाँ पे लग दो. एंड इट इज नॉट कि आप ऐसे हिलाओगे तो ये गिर जाएगा. इट इज वेरी, द मैग्नेट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, ये आराम से अटैच होकर रहता है. ठीक है, अभी मिस्टेकनली मेरे हाथ से गिर गया था, बट नॉर्मली इफ यू पुट इट प्रॉपर्ली ये बहुत आराम से ऐसे लग जाता है. एंड देन यू कैन ऑलवेज यूज इट. नाउ लेट मी शो यू हाउ टू माउंट इट. In between, if you have any questions, please feel free to ask. I think we don't have much time left, but I can always get back to you later, or you can get back to me. And so this is where you, जैसे मैं दिखा रहा था, this is the mounts. आप बेस माउंट को यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे जो आपका ट्राइपॉड का होल है आपने उसको यहाँ लगा दिया, and then you tighten it up with this amazing thing जो कॉइन को रेप्लिकेट कर रहा है यहाँ पे. But then seriously this comes very handy. आप सबको पता होगा, most of you, I'm assuming, are professionals. तो यहाँ पे so those are my Facebook and Instagram account detail. I mean, so Instagram link. You can always reach me there. I'd love to get in touch with you and come tell you जो भी आपके queries है. Now ये हमने mount लगा दिया with this thing. जो मैं आपको पहला दिखा रहा था कि नॉर्मली क्या होता है जब भी हम माइक लगाते हैं, अगर आपने देखा होगा व्लॉगिंग के पे, तो माइक हमेशा ऊपर रहता है. ये जो हमारा हॉट शू है वहां पे हम नॉर्मली माइक लगाते हैं, पर इस ब्लॉगर किट पे हम यहाँ पे माइक नहीं, हम बल्कि यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था हमारा एपर्चर का लाइट है, वो लाइट लगाए. उस लाइट को लगाने के लिए यू हैव दिस माउंट नीचे, जो उसको आप अटैच करोगे, एंड अकॉर्डिंगली यू टाइटन इट अप. ये टाइट हो गया प्रॉपर्ली. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, एक मिनट मैं इसको बूस्ट कर लेता हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे मैंने बताया, एट दिस पर्टिकुलर hot shoe mount, will put this and then attach it. See, it's gone. And now all you have to do is ये जो screw है इससे आप टाइट कर दोगे and it's stuck. इसको भी आप टाइट कर सकते हो according to your need. यहाँ पे एक और छोटा सा screw या रिंग दिया हुआ है, which according ऐसे move ना हो, you can tighten it up. ठीक है. So now what I'm ready with is my lights, camera. What I need is the sound. So now this sound जो मैं पहले आपको बता रहा था, स्मॉल डिक माइक, स्मॉल डिक की वजह से जो ये माउंट बना है, अब हम माइक जो हम यहाँ नहीं लगाते, वी प्लेस व्हाट टू डू इज दे गिवन दिस पर्टिकुलर स्पॉट फॉर द माइक. तो यहाँ पे विद दिस कोल्ड शू माउंट आई पुट इट इनसाइड यहाँ पे, देन आई स्क्रू इट अप. आई होप यू गाइस कैन सी इट क्लियरली. ठीक है, और फिर मैंने उसको completely screw कर दिया. So now I have my light, camera, sound ready with me. The last part which I was talking about was the gorilla mount. अब normally क्या होता है, whenever we are using a camera, हम अपना ट्राइपॉड मैक्सिमम हम सेंटर पे करते हैं, पर यहाँ पे हम सेंटर पे कर नहीं सकते बिकॉज हमारा जो Z50 का डिस्प्ले है 180 डिग्री नीचे आता है. सो वी कैन हैव समथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग आवर व्यू टू द डिस्प्ले, राइट. तो इसी वजह से स्मॉल डिक पे ये डिजाइन का, दीज आर द पर्टिकुलर होल्स वेयर अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इस गोरिल्ला पॉड को जहाँ पे बेसिकली हम सेंटर पे माउंट करते हैं, बट व्हाटएवर यू वांट टू, वेरेवर यू वांट टू, यू कैन माउंट इट देयर, राइट. सो माउंट करने के लिए जैसे ये गोरिल्ला पॉड मैंने आपको दिखाया था, इट ऑल्सो हैज अ बबल बैलेंस टू हेल्प यू नो कि आपका इमेज, आपका जो वीडियो है वो डिस्प्ले प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं. All you have to do is take this base plate out. इस बटन को प्रेस करके, इस बटन को प्रेस करके बेस प्लेट निकाल टाइट कर लेना एक बार.
को प्रेस करके आपका बेस प्लेट निकल आएगा. देन दिस बेस प्लेट को आप यहाँ लगाओगे, प्रॉपर्ली हाँ यहाँ लगाओगे. और ये जो द मजेस्टिक थिंग दैट वी हैड, द कॉइन का रेप्लिका, इसको हम यूज करके विल टाइट इट अप. यूज टू इट प्रॉपर्ली. तो ये टाइट हो गया है. Now all I have to do is take this और इसको बेस प्लेट के अंदर ऐसे आराम से माउंट करना है. Now my vlogger's kit is ready. I've got sound, camera, tripod, light and everything which is ready. I can usually, अगर आप देख सकते हैं, I'm operating it very easily with one particular hand. It's very lightweight. और इसका जो कैपेसिटी है, इट कैन होल्ड अराउंड 3 kg का वेट ये होल्ड कर सकते हैं. बट फॉर मी, आई कैन आराम से एक हाथ से आराम से आई कैन ऑपरेट, आई कैन वॉक अराउंड व्हाइल आई एम ब्लॉगिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग. स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगा अकॉर्डिंगली. सो एंड इफ आई वांट टू जस्ट कीप इट समवेयर, आई कैन कीप इट राइट ऑन टॉप एक टेबल पे, एंड देन आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. मेरे सारे ऑपरेशंस जो है वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे स्क्रीन पे मैं कैन टैप करके मैं ऑपरेट कर सकता हूँ. So this is the vlogger kit. Not necessary. It is called a vlogger kit, but not necessarily आप इसको खाली vlogging के लिए use करोगे. If you're a travel photographer, if you're a travel vlogger, not vlogging is sorry, but in fact even in the wedding and everything, you can always use this camera as a secondary camera. If you're using Z6 and Z7, आप use करो किसी शादी में, किसी event पे, so this Z50 can always come in handy to take all those behind the scene footages. और इनफैक्ट अगर आप वेडिंग पे शूट करते हो, आई हैड दिस अमेजिंग आइडिया वेयर नॉर्मली वी डोंट गेट ऑल दो सेल्फी फुटेजेस ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम राइट इन एनी पर्टिकुलर वीडियोस दैट वी सी. तो Z50 अगर आप एज अ सेकेंडरी कैमरा यूज करो, यू कैन गिव द कैमरा टू द ब्राइड एंड ग्रूम जहाँ पे वो बैठे हैं. सपोज दे आर सिटिंग समवेयर, 16 to 50 लेंस है, तो आप उसको थोड़ा वाइड पे शूट करोगे तो यू विल ऑलमोस्ट गेट टू क्रॉप फैक्टर लेके 24 mm का आपका एक वाइड मिल जाएगा. एंड देन you can give them to shoot all those video का जो selfie है वो अपना shoot कर. So you will have a unique footage all together. मतलब bride and groom का एक selfie footage with proper 4K में अगर आप shoot करें तो 4K में या full HD 1080 तो या आपको 120 fps पे shoot करना है, accordingly आप उसको shoot कर सकते हो. ठीक है. So that was more of the vlogger kit and about Nikon Z50. I don't think we have enough time. It's already up the time. I would love to hear from you guys once this session is over. You have any particular questions regarding mirrorless cameras or जो भी हो, please feel free to contact me. I'll be more. अगर मैं खुद से नहीं कर पा रहा, always make sure to connect with that particular person who will sort out your issues और जो भी आपका issues है. If you want to know about हमारे mirrorless camera or whatever what else we have in terms of lens, if you want to check them out, you can always visit Primes and Zooms. They will be more than happy to give you a demo. Provider भी सब कुछ खुला है. Just be careful whenever you're going out there. Be safe and then maintain whatever social, whatever COVID safety you have to maintain and check out the camera, learn about it. I think Primes and Zooms, they will give you proper gate services to let you know about the camera. Or in future, if you have any time if you want to contact me, please feel free to contact me. I'll be more than happy to help you. Right? So that was it, guys. I think we are up, and I haven't seen any more questions. Thank you everyone for being a part of it, and take care of yourself. Goodbye. I still remember the day Una, as we call her, and to some of you, she's still known as Aranya. When the day she was born, and she brought over to her mother after the operation, and she sneezed 3 times, and even now she does the same. So that's one episode I wanted to tell all of you.
nervous breakdown. We are going through Fukan's crazy times, but yet is also good times for all of us. Last 2 days have been hectic, and today is the D-Day for all of us, when Tim and Naranya, come together in the union, and hopefully they will stay blessed the rest of their life in each other's arms. For her and Tim, they are such a lovely couple. Una is the most beautiful person I know, and Tim is a fantastic new cousin to have in my life, and a brother too. Oh, the preparation for Sangeet, okay! We're taking Bollywood to Australia, and we're gonna conquer it. I love you to bits. I think you enable me in all the best kinds of ways. You make me better, and I'm grateful for that. I look forward to a lifetime ahead of pushing each other and making sure that we're the best we can be. Hope you liked that video. Thanks everyone for joining this session today, and see you again tomorrow for our upcoming session. That is this one. Just take a look at the details. Thank you once again. See you soon.